Hello friends, welcome to ixamBee. Today is our live session for your English session, English section of your banking exams. Acha, and we are holding these sessions every day. I hope you're there, you're joining these sessions regularly. So this is an effort from our side to help you understand that what type of questions come in your banking exams and also what kind of approach you should follow while solving these questions. अब आज इंग्लिश सेक्शन की क्लास है. इससे पहले आपने इंग्लिश की स्ट्रैटेजी की देखी, फुल एग्जाम स्ट्रैटेजी की देखी, फिर उसके बाद यू आल्सो सॉ अबाउट जीए, मैथ्स, जीआई की अलग से हुई. सो इस तरह बहुत सारे सेशंस हम एवरी डे 11 o'clock आपका होल्ड होता है. इंग्लिश का आपका 10 o'clock सेशंस होते हैं. ये आपका अगला सेशन 10 o'clock वाला इज ऑन 19th and 26th ऑफ दिस मंथ. सो मेक श्योर कि आप 10 o'clock इनको ज्वाइन करें. रेस्ट ऑफ द सेशंस आपके 11 o'clock रोज चलते हैं. सो प्लीज ज्वाइन दीज सेशंस एंड यू विल गेन a lot of knowledge and you will also know that what is the right approach that you should follow by solving these questions that come in your exam. Right? अब हम लोग आज देखेंगे a favorite of all the examiners these days, which is word swapping. ये बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल एग्जाम्स में. इनफैक्ट हमने पिछले सेशन में जब फुल स्ट्रैटेजी डिस्कस करी हाउ टू अप्रोच द इंग्लिश सेक्शन इन आवर एग्जाम्स, सो उसमें भी हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डिस्कस किया था. तो हमने देखा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आपके वर्ड स्वैपिंग से हर एग्जाम में आए हैं. तो यहाँ पे भी एक लेट्स हैव अ लुक हियर. अब यहाँ पर वन थिंग इज कि आपका ये जो आज हम पढ़ेंगे आज और आगे भी सेशंस में, तो इंग्लिश वाला आपका आईबीपीएस आरआरबी में नहीं आता है, राइट. सो उसके अलावा जो आपके एग्जाम्स होते हैं, चाहे आईबीपीएस पीओ का हो, क्लर्क का हो, एसबीआई का हो, पीओ क्लर्क, ईसीजीसी पीओ हो, तो आपका एग्जिम बैंक हो, यहाँ पे वी हैव नॉट मेंशन दैट, बट जितना भी जिस भी एग्जाम में आपका इंग्लिश सेक्शन आता है, कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो, उसके लिए ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी. सो इफ यू आर एन एस्पिरेंट, अ बैंकिंग एस्पिरेंट, आप एग्जाम लिखना चाहते हैं, तो आप ये सेशन जरूर देखें. और वैसे भी दे आर फॉर फ्री, सो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज में ऐड ही होगा. So, as I said that we conducted a session last time on English, how to approach this section. So, उसमें हमने देखा कि पैटर्न क्या रहता है एग्जाम का, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कितने कितने मार्क्स के आते हैं, इंग्लिश के कितने मिनट्स आपको दिए जाते हैं, ये हमने देखा. फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, और हमने देखा था कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. इसमें हमने स्ट्रेस दिया था दैट हाउ कि आपको ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग में आपको अपना बेस वहां पे बिल्ड करना है, बिकॉज दैट इज द रूट. और अगर आपने वो सेशन मिस किया हो, सो आप यहाँ हमारे चैनल पे जाकर यू कैन ऑलवेज go back to that session and have a look at it. So we had discussed that your base is your vocabulary and your grammar and your reading skills, right? So that is what we have to work on. And also we had discussed the tips to prepare on these basis of your जो आपकी जड़ है, जो आपकी रूट है, उसको आप कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके लिए टिप्स हमने अलग अलग देखी थी. फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्रामर, for enhancing your vocabulary and for building your reading skills. All right, and हमने कुछ sample questions देखे थे and we had practiced those questions. All right, so friends, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी बोला a while back that zero से PO हमारा ये इनिशिएटिव है ixamBee का, कि आपको अगर आप एकदम ब्लैंक स्लेट लेकर हमारे पास आए हैं, we make you a PO. हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपका बैंकर बनने का जो सपना है, इट विल बी कंप्लीट विद अस. ओके, सो इसीलिए हम ये सेशंस भी कंडक्ट कर रहे हैं. एंड ऑल्सो ये पैटर्न जो जैसे मैंने कहा हमने लास्ट टाइम देखा था, सो दिस वाज ये एक जिस्ट है उसका. सो इंग्लिश सेक्शन में वी गेट 30 क्वेश्चंस ऑफ 30 मार्क्स एंड आपको 20 मिनट्स में करने होते हैं. दिस इज फॉर आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ. आपका ईसीजीसी पीओ में थोड़ा डिफरेंट आता है. आपके 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस आते हैं. You have to solve that in 30 minutes of time. All right. Now we are looking at
what are the types of questions that are asked in the exam? Again, it is not limited to what I have written in the screen, what you see in the screen. The type of questions are not limited to it, but they are mostly of this type, and we get several other types also, like your para jumbles. You get a lot of different type of questions. Sometimes when the examiner has to make the exam difficult, they mix the type of questions, like they jumble parts of the sentence, error, ये सब चीजें mix कर देंगे, filler mix कर देंगे, jumble parts of the sentence mix कर देंगे, इस तरह से mix करके question बनाते हैं. But these are the basics. If you have tried to solve all these type of questions, and if you have built on the basic of your English, जो मैंने पहले भी बोला, and again in this session also I emphasized that your vocabulary, grammar, and your reading comprehension skills are very important. Reading and comprehending, कि आप पढ़ रहे हैं उसको क्या समझ रहे हैं, ये सब चीजें अगर आपने बिल्ड कर ली, और ये क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पर है इस टाइप के क्वेश्चंस, if you practice these questions and your base is built, so you will be able to tackle all the type of questions that come in the exam. All right. So now, why are we doing word swapping today? The reason is this is a favorite. You see here, in every exam since past in the past year, and also before that, we are getting word swapping a lot, many times. In fact, not only in your PO and clerk exams, even in specialist officer, you see there are a lot of koi exam ho raha hai, you are getting word swapping questions these days. And the reason behind it is, अभी आप करेंगे, you will know the reason, because this is what वो student की skills check कर लेता है about what is the student is having proper common sense or vocab अच्छी है, और these questions can be solved in many ways. So कौन सा way, किसी भी way करके, if you are able to solve these questions, then the examiner knows that okay, you are good at least something, and you are able to, if you are able to solve these questions. Okay, अगर आपकी grammar अच्छी नहीं है, maybe आपकी vocab अच्छी है, तब आपने question कर दिया, there is some way जिसको आपने apply करके question कर दिया. We'll see those ways, different ways. So it is, in short, it is a favorite of examiners. तो ये आ ही रहा है. So definitely stick with us till the end of this sessions, and also we have a set of practice questions at the end of this session, जो आपको मिलेगा in the PDF form description box में, and that PDF will be uploaded once the session ends. All right. So attend this session, and after that you will be able to download that PDF. All right. तो आगे चलते हैं. So let's see that what are these type of questions? What is word swapping? What are we talking about? Let's just have a look at that, a very rough look. Okay, ऊपर से we'll just have an overview. So here the direction is given. So it says that in each of the questions given below, 4 words are given in bold. These 4 words may or may not be in their correct position. Okay, they may or may not be swapped. All right. Now the sentence is then followed by options with the correct combination of words that should replace each other in order to make the sentence grammatically and contextually correct. Now, find the correct combination of words that replace each other. Now, if the sentence is correct and no exchange or swapping is required, then you have to select E as your option. अब ये हो गई direction. Now, how will the question look like? ऐसा दिखता है आपको question. Alright, so once, now if you have seen this question, अब आप एग्जाम में if you see a similar question और आप direction पढ़ेंगे, then you will get an idea what you have to do. You will not be blank. All right. So here the question says, the minister said the decision would be satisfaction in ensuring smooth and hassle-free procurement to the instrumental of the farmers. Now we know ये sentence पढ़ के ही we get to know that the sentence is not framed correctly, and we have to do something to make the sentence grammatically and contextually right. All right. So here we see that the minister said the decision would be what swapping has to happen. Let's see here. The swapping has happened. When we read it now, would be instrumental in ensuring smooth and hassle-free procurement to the satisfaction of the farmers. And the correct answer here is only B. Now, don't be confused कि मैम ने कुछ बताया नहीं यहाँ पे. This is just to give you a look that this is what you have to do. Now we will discuss that what is the approach that we should follow to solve these questions, right?
So techniques to solve. Now don't get perplexed that what happened there. We didn't discuss, we didn't talk about that. This is an example that this type of question comes. It looks like this. Okay, let's move ahead. Techniques to solve. First is understanding. ये हमने understanding से किया, right? This question जब हमने पढ़ा we saw that okay this is not making sense. फिर हमने exchange कर दिया. But let's see in detail what do we mean by understanding. जब हम when we are in a habit of reading or maybe even if we are okay with speaking also speaking English, the moment we read अगर हमें habit भी नहीं है, but sometimes it happens when we read something we know that the sentence is not correct, right? So there you have to use your mental ability, your understanding skills to figure out that the sentence is not correct and what kind of swapping or exchange will make that right. Now, for example, here in this sentence, if we see that with the country's logged tourism industry, now we see that this adjective for tourism, logged, is not correct, right? It may be dormant, it may be a very good, but it cannot be logged, right? It can be thriving, it cannot be logged. So this is incorrect over here. Logged does not define tourism industry correctly. So this needs to be changed. So we know this for sure. Now we'll see, and foreign workers remittances sapped by the agencies. Now will the agencies sap? Now we'll see again. Okay, the credit ratings pandemic. Now here the moment we read we know that here credit ratings and agencies पहले given था, right? Credit ratings agencies is the correct combination. Okay, so आगे और देखते हैं. Let's move ahead. To downgrade Sri Lanka and effectively lucrative it out. So no, obviously effectively this is also wrong. So everything is wrong here. Now we'll see कि कौन सा word किसको swap करना चाहिए. Now let's see here. Sri Lanka, first word with the country's logged tourism industry. This is wrong. So which word should fit here? With the country's lucrative tourism industry and foreign workers remittances sapped by the pandemic. Now what do you mean by sap? Sap means affected badly, weakened by the pandemic, and the credit ratings agencies, okay, moved to downgrade Sri Lanka and effectively logged it out of international capital markets. Now the sentence makes sense, right? So what swapping did we do here? We swapped A, D and B, C. So merely by understanding also we can find out that what words need to be swapped with each other, right? Now what is the other way? It is elimination of options. This is also a very good way of an approach by which in the exam it comes very handy. When we just look at the options and we know that one option is not right, we can eliminate it, and that reduces our chances of choosing the wrong answer, right? Now here let's do this by elimination. Now following the state government's scheduling, now is it right, do you think following the state government scheduling is the correct combination? Okay, so let's do one thing. Whenever you are approaching this question, and if you have in mind that okay, I have to eliminate the options, just try to look at the options first and eliminate those options which are single and also the combination that is not being repeated. Okay, like AD is coming just once. Let's see if swapping AD would make it meaningful, right? So see, now here when we read it, we know that some exchange is required. So firstly, our option E is discarded, right? Now, when we see option C, it says swap A and D. So let's swap it and see if it makes sense. Following the state government's handle that schools can, obviously this does not make sense. So this will also be discarded. Okay. So now here we see that CD is given twice. So let's just see option B. We'll see if AC, swapping AC would make sense. Now following the state government's receive that schools can, obviously this also does not make sense. So we will remove option B also from our consideration. Now here C and D is given. So let's first see for AB, right? Because if AB is right, we can choose this as a correct option.
and if AB is not right, then we can choose D as our option. So we'll see AB. Following the state government's announcement that schools can reopen for students, schools are scheduling virtual and in-person sessions, right? So A and B are making sense. So A and B seems to be right. And here we can just mark it, mark option A as a correct answer and then move ahead. But here, since we are learning, let's also check for C and D. And in-person sessions with parents to handle their queries and receive feedback on what safety measures can be implemented. Simple. So obviously our answer we have reached here, it is option A, B and C, D need to be swapped. All right. Okay. So friends, here I would like to take an opportunity to introduce to you. अगर आप banking के बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप active रहते हैं in this field, तो आपको पता होगा already that ixamBee has come up with its ultimate BeeBanker online course. अब ये एक online course है and the new batch will start from 16th April. Now इस course की खास बात ये है that if you want to become a banker and if you enroll with ixamBee, the good thing is you will either become a banker in 2 years or you will get full refund of your entire money. All right. तो इसीलिए अगर आपको banker बनना है और आप चाहते हैं कि या तो मैं एकदम बैंकर बन जाऊं या अगर मैं बैंकर नहीं बना आई शुड हैव द कोचिंग मनी बैक विद मी, दिस इज द कोर्स इन विच यू शुड एनरोल योरसेल्फ. ऑलराइट. तो अगर आप इस कोर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यू कैन आइदर विजिट आवर वेबसाइट ixamBee.com or you can call at this number which is given at your screen. It is 9205524028. So अगर आपको फुल रिफंड चाहिए या बैंकर बनना है, यू आर टोटली इन आवर हैंड्स और हम वी विल इंश्योर दैट आप बैंकर बन के ही निकलें. ऑलराइट. सो यू कैन हैव मोर डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स by calling at the number which I'm just showing at your screen. Now, अब हमने देखा कि understanding और elimination of options से how can we solve these questions, word swapping questions. Now, what is the other way to solve these questions? It is considering blanks. अब ये क्या होता है? What is this? Now, suppose we have this sentence. Now, we will just consider all these A, B, C, D, these words as blanks. Okay, like this. Now, we will start filling the blanks with these words that were highlighted, right? So here it says a British era bungalow on a hillock that dash to be. अब यहाँ पे क्या आएगा? That used to be, right? When we see the options, हम एकदम से यहाँ लगा देंगे used to be, एकदम close test जैसा हो गया, right? And close test is the easiest thing to solve in the paper, right? That used to be, तुरंत आप used यहाँ डाल देंगे. अब आपको पता है that used आया है converted की जगह, right? So this is swapping, तो converted आ जाएगा used की जगह. Okay. Now A and B have been swapped, and now we see that A and B swapping option is in pair is in option C, right? So here this will be our answer. But since again I'll say since we are practicing, so हम आगे का भी check करेंगे. Into a dash center. कौन सा center होता है? Heritage center, right? Heritage center depicting life along the Brahmaputra river. Depicting मतलब showing life along the Brahmaputra river. So यहाँ heritage center आ जाएगा and you will have depicting life along Brahmaputra river. So your D and C have also been swapped. Your option C is the correct answer. And I personally find this method to be the best method ever because cloze test is actually very easy to solve. Children, all the students really like it. The cloze test आता है because just the entire passage or the entire sentence is given in front of you and what has to be filled सब आपके सामने है. So it is very easy to fill in that case. So एक small cloze test की तरह आप इसको solve कर सकते हैं by considering the highlighted words as blanks. Okay. Next हम देखेंगे okay your vocabulary. Now obviously vocabulary helps a lot, right? अब आप सोचेंगे that vocabulary is like आपको सिर्फ word का meaning पता हो. There are certain things जहाँ हमें पता होता है कि okay this word is very simple words, but उनमें भी अगर हम confuse हो जाते हैं या homophones या homonyms, we get confused in those words
एंड उसके बाद अगर हमें उस टाइम पे वो वर्ड नहीं आ रहा है, वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन अगर ऑप्शंस कंफ्यूजिंग दे दिए तो। ऑलराइट, लाइक हियर हम देखेंगे, आई ब्रॉट पोर्टेबल स्टेयर्स to felicitate thorough cleaning of my house for the party which I was throwing to facilitate my sister for topping the exams. Now, anybody who wants to answer, I will be waiting for answers, and I want to know if anybody thinks that any kind of swapping is required here. Yeah, so what kind of swapping is required here? अब हमें पता है कि felicitate and facilitate. Now these are words which confuse most of the students. Excuse me. Okay, then अब यहाँ पे अगर हमें इसका मीनिंग नहीं पता है, we will not be able to solve this question, right? तो let's see what is this. When we see this, ये क्या कर रहा है? This is a moving walkway, and what does it do? What is its function? Its function is कि वो हमें when we go to airports, we see these walkways. This takes us from one end to the other end. जैसे हम आप malls में भी देखते होंगे, escalators होते हैं और यहाँ पर एयरपोर्ट्स में होता है moving walkway. तो ये हमें एक एंड से दूसरे एंड लेके जाता है, एंड वी जस्ट हैव टू पुट द लगेज हियर एंड अपने आप भी खड़े हो जाओ, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट स्टैंड हियर एंड गो. सो व्हाट इज इट डूइंग? इट इज एक्चुअली फैसिलिटेटिंग, हमें फैसिलिटी दे रहा है या हमें हेल्प कर रहा है मूव करने में. तो ये है फैसिलिटेट. ओके, एंड फैसिलिटेट आया है आपका फैसिलिटी से. ये हमें एक फैसिलिटी दे रहा है या हमें हेल्प कर रहा है, राइट, आगे मूव करने में. So facilitate का मीनिंग होता है helping, comes from facility, right? और ये क्या हो, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे felicitation हो रहा है. ओके, यहाँ पे congratulate कर रहे हैं. So this is the difference between these two words. Now when we know these words and we know the difference between these two, we know that here the usage of B and C is incorrect. I brought portable stairs to facilitate thorough cleaning of my house for the party which I was throwing to felicitate my sister means congratulate. Here it will be facilitate means to help thorough cleaning of my house or to promote thorough cleaning of my house for the party which I was throwing to felicitate or congratulate my sister for topping the exams. So here the correct answer will be only option B, C, right? So let's move ahead. ये आपकी vocabulary हो गया था. Then comes your grammar. Now this is also one way to solve. Use your grammatical skills to solve. Let's see an example here. Now we do have a judicious technology. Again, आप इस sentence को पढ़ें. We do have a judicious that technology can do a world of good in delivering health, education, and other development robust. But one has to be very careful and consensus in its deployment, and there should be an independent and outcomes regulatory mechanism to oversee that process. Okay, so abhi yahan pe when you read the sentence, you know this is not right. Some exchange has to happen. So about that exchange, we will again consider the highlighted words as options and their place as blanks. Okay, so we do have a. Now, how do we use grammar here? Grammar कैसे use होगी? Now here we know यहाँ पे एक noun आना चाहिए. We do have a dash. Dash means a thing. A thing has to come here. एक कोई चीज है. We do have a dash that technology can do a world of good in delivering health, education, and other development. What? Tool or something, right? Again, it is a thing. Noun आना चाहिए. But one has to be very careful and dash. Careful क्या है? Adjective है. बता रहे कैसे होना चाहिए? Careful and again adjective आना चाहिए यहाँ पे. In its deployment, and there should be an independent and dash regulatory mechanism. एक तरह का कैसा
उसको डिफाइन करेगा, यानी कि वो एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषता बताएगा उसकी। ओके, एडजेक्टिव हो गया। सो यहाँ नाउन, दो फर्स्ट टू ब्लैंक्स में आपके नाउन आने चाहिए, यहाँ आपके एडजेक्टिव आने चाहिए। अब आप वर्ड्स देखिए, नाउन क्या है आपके, कंसेंसस एंड आउटकम्स आर योर नाउन्स, judicious and robust are your adjectives, right? So आपका जैसे आप देखें कि नाउन है, सी और डी में से एक आना चाहिए। लेट्स ट्राई टू फिट इट हियर। नाउ वी डू हैव अ व्हाट, कंसेंसस, दैट अब जैसे ही सी यहाँ पे आ गया तुरंत सी की जगह ए आएगा। एंड जुडिशियस यहाँ हो जाएगा, एंड जुडिशियस इन इट्स डिप्लॉयमेंट। यहाँ क्या आना था, यहाँ पे भी एक नाउन आना है। अदर डेवलपमेंट, नाउ वी सी, यहाँ क्या है, आउटकम्स। ओके, तो यहाँ पे आउटकम्स आएगा। अब आपने देखा कि कंसेंसस क्यों डाला हमने, दिस इज आउटकम्स, राइट। अगर आप यहाँ जाएं, यहाँ नाउन आना चाहिए और आपका नाउन है केवल सी और डी, सी एंड डी आपके नाउन है, और आउटकम्स क्या है, प्लूरल, यहाँ क्या है, अ, सो आउटकम्स कैन नॉट कम, तो सीधा कंसेंसस आएगा यहाँ पर। ओके, एंड फिर सीधा जुडिशियस यहाँ आ जाएगा, बिकॉज दिस इज स्वॉपिंग। एंड अदर डेवलपमेंट, यहाँ नाउन आना है, एक ही नाउन बचा है आपका, आउटकम्स, सो आउटकम्स आपका वहां आ जाएगा, एंड रोबस्ट उसकी जगह यहाँ आ जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आप अपना, या तो आप अपनी वोकैब यूज कर सकते हैं, आप अपनी ग्रामर यूज कर सकते हैं, या आप ब्लैंक्स कंसिडर करके एज क्लोज सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बट आई पर्सनली डू नॉट सजेस्ट कि आप बहुत ज्यादा ग्रामर की इंट्रिकेसीज में जाएं, बहुत ज्यादा आप ग्रामर को यहाँ पे यूज में लाएं। बेसिक ग्रामर ठीक है, जब आपको पता है कि टेंस, दिस इज द रॉन्ग फॉर्म ऑफ टेंस, तो हमें स्वैपिंग करनी है, दैट्स इट। उसकी ज्यादा अगर आप डिटेल में जाने लग गए तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। if if there are certain bridges in your gaps in your grammar, तो आप बाकी चीजें यूज करिए, एज क्लोज करिए, एज ब्लैंक यूज करिए, बट अवॉइड going deep into grammar for solving these questions. Obviously if it is good, it's great. अगर आपका ग्रामर गुड है तो ऑब्वियसली आप तो सॉल्व कर ही लेंगे सारे क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी ग्रामर गुड नहीं है, उसके बाद भी इफ यू वांट टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे, हमने अभी देखा हाउ, राइट। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। नाउ सेवरल themes that have dash in the discussions and dialogues. Now here the moment you see have dash, okay, have leading हो गया वहां पे, so this is have के साथ ये कौन सा टेंस आना चाहिए, this is present perfect tense, यहाँ पे ed फॉर्म आना चाहिए। okay, so ed फॉर्म means आपका okay emerged, यहाँ leading की जगह आ जाएगा और आपका leading emerged की जगह आ जाएगा, right। so a and b need to be swapped, और ये आपका केवल ऑप्शन डी में है। so let's see if c and d also, here you see a b is given only in one place, that is option d। so c d देखिए, अगर हम find resonance and find resonance with India's past, now resonance means relation, right, एक ऐसा memory spark होना, resonance with India's past and ongoing journey towards creating and improving, यहाँ पे भी ing फॉर्म है, यहाँ पे भी ing फॉर्म आएगा, improving food and livelihood security, right। c and d को अगर हम स्वैप करते हैं देन ऑब्वियसली ये हमारा ऑप्शन डी जो है एकदम सही है। ए बी सी डी को स्वैप करके द सेंटेंस बिकम्स ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट, राइट। तो लेट्स मूव अहेड। Again, I would request that you solve these questions by yourself. Hence, meeting daily necessity of nutrients should be added at as a growing requirements. अब आपने जैसे ये पढ़ा, you know as a growing requirements, ये गलत है, right? और वहां एग्जाम में कोई टाइपिंग एरर नहीं होगा, so don't consider कि no, okay, मे भी गलती से हो गया, no, nothing like that. As a growing, यहाँ पे क्या आएगा, रिक्वायरमेंट एंड नेसेसिटी आप देखें इज द सेम, हैव द सेम मीनिंग, राइट। तो आप रिक्वायरमेंट एंड नेसेसिटी को अगर स्वैप करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा दैट रिक्वायरमेंट यहाँ आएगा, नेसेसिटी यहाँ आएगा। सो एज अ ग्रोइंग नेसेसिटी एंड हेंस मीटिंग डेली रिक्वायरमेंट्स, दीज आर द करेक्ट फिट। अब देखिए AC कहाँ है, ओनली इन वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन
D. So this is actually the right answer. But we'll see if B, D also need to be swapped. Nutrients should be added at, no, add should be now looked at as a growing necessity, not just an. यहाँ पे an आ गया, an के बाद vowel आएगा यहाँ पे added advantage. So B and D also need to be swapped. So here our option D is the correct answer, right? So this is how swapping is actually easy. जब आप practice करेंगे, you will get to know that काफी easily ये solve होते जाते हैं. All you need is practice and some basics to build, right? So अब ये वाला देखें, and traceability here, understand that you should be able to implies exactly what use at the individual level in the happened of the technology. Now we know this is very wrong. Okay, when we read it, we know this is making no sense. And traceability here, what means? Yeah, implies, right? So B, yeah. So A and B should be swapped. Here implies that you should be able to understand exactly what happened at the individual level in the use of technology. Okay, so option C is the correct answer here. So अभी हमने जितनी भी टेक्निक्स देखी और हमने आगे जितना भी देखा, प्रैक्टिस करा. So we know there are certain ways and many ways in which we can approach these questions. So let us try to solve these questions using all those methods and जो आप पे फिट बैठ रहा है. ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आपको एक मेथड, इफ आई लाइक ब्लैंक, तो आपको भी वो पसंद आएगा, बट एक्चुअली इट इज द इजीएस्ट वे. काफी लोगों को पसंद आता है, बट आप उससे डिफरेंट हो सकते हैं. आपको वो क्या ऐप या ग्रामर ज्यादा सूट कर सकता है. सो फाइंड व्हाट सूट्स यू द बेस्ट. ओके, एंड देन उसके बाद हमने आपको सब बता दिया यहाँ पर. एंड नाउ व्हेन यू नो व्हाट सूट्स यू द बेस्ट, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कीजिए, राइट? सो नाउ हियर आर सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ये आप डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर दिस सेशन. वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस सेशन and you will find this these practice questions in the end in the attached PDF, right? तो हम लोग आज यहीं पे रोकेंगे क्लास को, and I will share these questions with you in the PDF. and मैं आपको एक बार याद दिला दूं, all mock tests at ixamBee are free. So please make the most of it. आप उसको practice कीजिए, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना यू विल बी गुड एट इट. ओके, सो दैट्स इट. और एक आप चाहें तो यू कैन हैव अ लुक एट वन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड ट्राई सॉल्विंग इट हियर. अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं करा तो शेयर द आंसर इन द कमेंट सेक्शन after the end of this live session. And don't forget to download the PDF. आपको वो solutions के साथ you will get the answer in the PDF. तो वो डाउनलोड जरूर करें.